मेरा कुछ अच्छा सोचा होगा आपने, इसके लिए वेट करा रही है। भगवान के कुछ और कृपा बरसने वाली होगी मेरे ऊपर। चलिए। Hare सो Krishna, Danvat Pranam. धन्यवाद। Welcome everyone to Bhagwad Gita Shloka class. Today, His Grace Akshara Goddess Prabhuji will be giving her transcendental words of wisdom on the Shloka 4.1. Hare Krishna, welcome everyone. Welcome Prabhuji, over to you. Hare Krishna. थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम टू ऑल। भगवद गीता चैप्टर 4, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। श्री भगवान उवाच इवं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अव्ययम् विवस्वान् मन्वे प्राह मुनिर्इक्ष्वाकवे अब्रवीत। Translation: The personality of Godhead, Lord Sri Krishna said, I instructed this imperishable science of yoga to sun god Vivaswan, and Vivaswan instructed it to Manu, the father of mankind, and Manu in turn instructed it to Ikshwaku. प्रभु जी, ये चैप्टर का नाम ही ऐसा है, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। ये अक्खा चैप्टर में सिर्फ नॉलेज 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 का बात किया गया है, ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण ने ये ज्ञान, भगवद गीता का ज्ञान सूर्यदेव को दिया था। उनका नाम था विवस्वान। तो परपट में प्रभुपाद जी लिखते हैं, परपट, herein we find the history of Bhagavad Gita traced from a remote time when it was delivered to the royal order of all planets, beginning from the sun planet. The king of all planets are especially meant for the protection of inhabitants, and therefore the royal order should understand the science of Bhagavad Gita in order to be able to rule the citizens and protect them from material bondage to lust. Human life is meant for cultivation and spiritual knowledge, in eternal leadership, in eternal relationship with the Supreme Personality of Godhead, and the executive head of all states and the planets are obliged to impart this lesson to the citizen of education, culture, and devotion. In other words, the executive heads of all states are intended to spread the science of Krishna consciousness so that the people may take advantage of this great science and pursue a successful path, utilizing the opportunity of the human form of life. In this millennium, the sun god is known as Vivaswan, the king of sun god, which is the origin of all planets within the solar system. In the Brahma Samhita 5.52, it is stated, चक्षुर इस सविता सकल ग्रहणानम राज समस्त सूरमूर्तिर एष तेजस येषा अन्या ब्रह्माति संवर्तो कल चक्र गोविंदम आदिपुरुषम तम अहम भजामि. Let me worship the Lord, said the Supreme Personality of Godhead, Govinda, Krishna, who is original person and under whose order the sun, which is the king of all planet, is assuming immense power and heat. The sun represents the eye of the Lord and traverses its orbit in obedience to his order. The sun is the king of the planets, and the sun god, at present of the name Vivaswan, rules the sun planet, which is controlling all other planets by supplying heat and light. He is rotating under the order of the Krishna, and Lord Krishna originally made Vivaswan his first disciple to understand the science of Bhagavad Gita. The Gita is not, therefore, a speculative treatise for the insignificant mundane scholar, but is a standard book of knowledge coming down from the time immemorial. In the Mahabharata, Shanti Parva 348.51 to 52, we can trace out the history of the Gita as follows. Treta yada guyo chainto yavaswana manvedadu manuschaloka vritti artam sutaya kaishvaka dadu ikswaku cha katha hito
व्यापेय लोक अवस्थितः. In the beginning of the millennium, known as Treta Yuga, this science of relationship with the Supreme was delivered by Vivaswan to Manu. Manu, being the father of mankind, gave it to his son Maharaja Ikshvaku, the king of the earth planet and forefather of the Raghu dynasty, in which Lord Ramchandra appeared. Therefore, Bhagavad Gita existed in human society from the time of Maharaja Ikshvaku. At the present moment, we have just passed through the 5,000 years of the Kali Yuga, which lasts 432,000 years. Before this, there was a Dwapar Yuga, and before that, there was a Treta Yuga. Thus, a sum of 20 lakhs 5,000 years ago, Manu spoke this Bhagavad Gita to his disciple and son of Maharaja Ikshvaku, the king of this planet Earth. The age of the current Manu is calculated to last some 3 crores 553 lakhs approximately, years of which 12 crores and more than that have passed, accepting that before the birth of Manu, the Gita was spoken by the Lord to his disciple son God Vivaswan. A rough estimate is that Gita was spoken at least 12 crores of years ago, and in human society it has been extant for 2 million years. It was spoken by the Lord again to Arjuna about 5,000 years ago. That is the rough estimate of the history of the Gita. According to Gita itself and according to the version of the speaker, Lord Sri Krishna, it was spoken to the sun god Vivaswan because he is also a Kshatriya and is the father of all Kshatriya who are descendants of the sun god or the Surya Vamsa by the supreme personality of Godhead. This knowledge is apurusheya. Without human interpretation, the Gita must therefore be accepted without mundane interpretation. The may, mundane wranglers may speculate on the Gita in their own way, but that is not Bhagavad Gita as it is. Therefore, Bhagavad Gita has to be accepted as it is from the disciplic succession, and it is described herein that the Lord spoke to the sun god, the sun god spoke to his son Manu, and Manu spoke to his son Ikshvaku. प्रभु जी, प्रभुपाद ने इस श्लोक के बारे में ऐसा बताया है कि भगवत गीता, हम जो इस श्लोक के बारे में ऐसे बताते हैं कि ये कोई ऑर्डिनरी श्लोक नहीं है. इट इज अ साइंस स्पेसिफिक स्टडी ऑफ दिस साइंस ऑफ द गॉड है. इसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि नॉलेज कितने प्रकार के होते हैं. 6 टाइप्स ऑफ अपोलेंसेस भगवान के पास है. उसमें से एक है नॉलेज, दूसरा है ब्यूटी, तीसरा है फेम, चौथा रिनोन्सिएशन, पांचवा स्ट्रेंथ और छठा है वेल्थ. इसके ऊपर भगवान ने बताया है कि जिसके पास नॉलेज है वही सबको ये श्लोक के बारे में बता सकते हैं. और ये श्लोक इतना पुराना श्लोक है जो हमने पढ़ के दिखाया कि आपके सामने मैंने पढ़ के प्रस्तुत किया है. इस श्लोक के बारे में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि नॉलेज किससे के पास से लेना चाहिए, नॉलेज कौन दे सकता है, नॉलेज देने के लिए किसकी एलिजिबिलिटी है, ये सब के बारे में प्रभुपाद बताते हैं कि नॉलेज शुद्ध भक्त के पास से लेना होता है, भगवान का भक्त होना चाहिए और भगवान की सेवा में लगा हुआ चाहिए और कुछ जानता हुआ इसे. इसलिए सबसे पहले सन गॉड जो इस सन गॉड जो प्लानेट है वहां पर भगवान ने ये श्लोक और भगवत गीता का शेष श्लोक उनको सुनाया जो
ट्रांसेंडेंटल नॉलेज कहलाता है, ज्ञान कर्म योग। इसमें प्रभुपाद बताते हैं कि हमारा जो कृष्ण कॉन्शियसनेस है वो पूरा नॉलेज के ऊपर है, और ये नॉलेज एज इट इज है। इसमें कोई भी हम अपना मन का बात नहीं बता सकते हैं। प्रभुपाद ने कहा है ये भगवत गीता है जो एज इट इज है, ये एज इट इज ही बताना है, और एज इट इज ही बताया गया है सूर्य देव को। और वहाँ से परंपरा से चले आया हुआ है हमारे पास। आज ये हमारे पास हम प्रभुपाद के जरिए ये भगवत गीता का पठन करते हैं, और उनका ये नॉलेज हम लोगों के अंदर शेयर करते हैं और लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं। ये है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। और नहीं कि जबकि बाहर जो कोई पैसा कमाने वाले लोग हैं नॉलेज देते हैं, उनसे नॉलेज बिल्कुल लेना नहीं है। उसका उनसे जो हुआ नॉलेज हमको 5 मिनट के लिए भगवान भक्ति में लगा देंगे, लेकिन उससे हमारा कोई काम नहीं बनेगा। जबकि ये सूर्यदेव को भगवान ने बताया, इतने बड़े प्लानट के ऊपर जो सूर्यदेव है, जो पूरी सृष्टि को लाइट देते हैं, प्रकाश देते हैं, और उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि भगवत गीता एज इट इज एकदम सही ग्रंथ है, और उसमें से ये हमने उन्होंने सुना, और उसके चलते चलते हुए ये आज हमारे पास पहुंचा है। करीबन 5,000 साल के ऊपर हो गया है, और एक कलयुग का बेस्ट ग्रंथ है। भगवान इसको बेस्ट ग्रंथ बताते हैं, और इसका जो नॉलेज है हमको एज इट इज ही लोगों में शेयर करना है। नहीं कि हम अपने मन मन में चाहे मन चाही बातें और मन में कही गई हुई बातें सुनकर भगवान को लोगों में बांटे। भगवान यहाँ पर कहते हैं कि ये जो है गीता, ये कोई स्पेकुलेटिव ट्रीटिस नहीं है। ये स्पेकुलेटिव ट्रीटिस फॉर इंसिग्निफिकेंट मुंडन स्कॉलर, बट इज अ स्टैंडर्ड बुक ऑफ नॉलेज कमिंग डाउन फ्रॉम द टाइम इमोरियल। आगे कहते हैं कि ये कई सालों पहले, इन द बिगिनिंग ऑफ द मिलेनियम known as Treta Yuga, the science of the relationship with the Supreme was delivered by Vivaswan to Manu. विवस्वान भगवान ने ये मनु को दिया। मनु being the father of mankind gave it to his son Maharaja Ikshvaku, the king of this earth planet, the forefather of the Raghu dynasty, in which the Lord Ramchandra appeared. Therefore, Bhagavad Gita existed in human society from the time of Maharaja Ikshvaku. कितना पुराना ये ग्रंथ है, आज भी एज इट इज ही हम पढ़ रहे हैं। और कृपा हमारे ऊपर प्रभुपाद की है कि उन्होंने इसका ट्रांसलेशन एज इट इज ही किया है। उनका कोई शब्द बाहर से नहीं लिया है, और ये हमें समझाने के लिए, इसलिए प्रभुपाद की भगवद गीता ही सबसे बेस्ट ग्रंथ माना गया हुआ है। और आज वर्ल्ड पूरी दुनिया में यही भगवद गीता चलती है एज इट इज वाली। दूसरी सब गीता के अंदर आपको ट्रांसलेशन मिल जाएगा, पर परपट नहीं मिलेगा आपको। परपट जो प्रभुपाद ने लिखा है वैसा किसी ने परपट लिखने का कोशिश नहीं किया है। जैसे हमारे पास एक चीटिंग प्रोपेंसिटी है, चीटिंग प्रोपेंसिटी वाला जो गुण हमारे में है, उससे हम क्या नॉलेज देंगे लोगों को। हम खुद अपने आप को चीट करते तो हम दूसरे को भी चीटिंग ही करेंगे, तो वो नॉलेज नहीं कहलाता है। नॉलेज प्योर होना चाहिए, नॉलेज प्रभुपाद के भक्त को, भगवान के भक्त को होना चाहिए, और परंपरा से आया हुआ आना चाहिए। यहाँ पर स्पेसिफिक भगवान कहते हैं कि ये परंपरा से आया हुआ नॉलेज है। ये भगवान हमें समझाते हैं कि जब वो भगवान को बताए, भगवद गीता का ज्ञान दिया, तब जाके ये पृथ्वी के परंपरा के हिसाब से आज तक हमारे पास पहुंचा है। और विवस्वान भगवान हमारे जो हमको जो लाइट देते हैं, प्रकाश देते हैं, उनके वजह से ये सब पृथ्वी के ऊपर इनकी ब्यूटी चली हुई है। इसमें भगवान बताए, ब्रह्म संहिता में भी भगवान ने बताया, यस चक्षुर एस सविता सकल ग्रहणाम राज समस्त सूर मूर्तिर
एष तेजा यशा इन ज्ञान ब्रह्मेति संभाति कलो चक्र गोविंदम आदिपुरुषम तम अहम भजामि। ये बताते हैं। ब्रह्मश्वेता में भी बताया गया कि ये मिलेनियम, इन दिस मिलेनियम द सन गॉड इज नॉन एज विवस्वान, द किंग ऑफ द सन, which is the origin of all planets with this solar system. And the sun is the king of the planets, and the sun god rule the sun planet, which is controlling all other planets of supplying heat and light. He is rotating under the order of Krishna, and Lord Krishna originally made Vivaswan his first disciple to understand the science of Bhagavad. ये साइंस है भगवत, ये कोई अपना बनाया हुआ शास्त्र नहीं है। इट इज अ साइंस ऑफ भगवद गीता। बार बार भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि ये साइंस है, इट इज नॉट स्पेकुलेटिव, ये सिर्फ साइंस ही है। तो हमें इसमें मानना ही पड़ेगा, और हम मानेंगे ही। हम इस्कॉन वाले तो इस श्लोक के ऊपर बहुत बिलीव करते हैं कि जो इस हमारे प्रभुपाद ने हमको जो तात्पर्य बताया है इस श्लोक का, उसी के रास्ते पे हमें चलना है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी थोड़ा सा इसके ऊपर भी बता सकते हैं हाँ हाँ कि पहली लाइन जो है हाँ, इसकी श्लोका की, इमं विवस्वते योगम, योगम, he is हाँ using the word yogam, not योगम, Bhagwad Gita. हाँ So हाँ can हाँ। you just throw some light on this yogam? नहीं तो फिर मैं बताऊं। बताइए, आप बताइए। इमं विवस्वते, हाँ बताइए, आप बताइए। आप बेर का पढ़ा हुआ है ना, अच्छा है। See, the बताइए। yoga means the union with the Lord. यूनियन विद द लॉर्ड। Union with the Lord. Yoga means union with the Lord. And yoga is not that what is being done nowadays, which is only as an exercise to make the body fit. Yes. That is also necessary. When the body is fit, then you can also worship more for the Lord. So yoga is a union with the Lord, and Bhagavad Gita is telling us how to go to the God, how to live life and ultimately go to the Lord. This is what the Bhagavad Gita is explained for everything. And therefore the word is used as yoga. And when you will go to the chapter number 9, the same thing is called as Guhyam Akhyami Prachati. It is a confidential knowledge. Confidential knowledge. It is a confidential knowledge which is being given. And also we will see that all our planets which are there, they are all personified. Yani they are also devatas. Similarly, demigods. And similarly, all our mountains and rivers are also personified. And therefore, the names are given to them, like Himalaya. Himalaya is the father of Parvati. Parvati was born, she is the daughter of Himalaya and married to Shiva. Similarly, Radha is the daughter of Himachal Pradesh, Himachal mountain, and there Vindhyachal mountain, not Himachal, Vindhyachal mountain, and she is the daughter of. So that mountain is also as a personified. It so happened that when Parvati was born, and she from Himalaya, and then she got married to Shiva. So the Vindhyachal Pahad, he felt little jealousy for Himalaya, and he said, "Oh, he is having such a beautiful daughter. I will have more beautiful than that." And then the Radha comes and takes birth there, and she goes to Krishna. And naturally, Krishna is much more superior than Lord Shiva. Yes. So this is how the mountains are personified, and therefore this Bhagavad Gita has been spoken
to planet Surya, Dev. who is considered to be the king of all planets. King of all. So very nicely explained. Thank you, Aksara. Akshar Gaur Prabhu. Yes, I will say Akshar Gaur Prabhu because your name is not changed. It is